Hi all, welcome back. Okay, so yeah, I will discuss what all topic we have covered yesterday, right? With the overview, and later on we'll cover up the today's topic as well. Okay, so yeah, in the yesterday's lecture we have covered about the system testing and its subtypes, right? So under system testing, basically we have seen the major four types. First one is the GUI testing, that is the graphical user interface testing, under which we are mainly focusing on look and feel of application, where we'll be checking for like UI part, right? User interface part on the text, font size, color size, buttons, images, videos, different whatever all the components are listed, right? So we are going to cross check. Okay, so for this GUI testing, we'll be referring design documentation. In the previous phases, as we have seen, in the design phases, we used to get the high level, low level documentation, right? So as a part of GUI testing, we'll be keeping design documentation as a reference. Okay, design documentation as a reference over here. Okay. ओके, बिकॉज वी नीड टू वैलिडेट, हमें जो भी चीज वैलिडेट करनी है, जो भी चीज चेक करनी है, राइट? आगे जब भी हम टेस्ट केस की बात करेंगे ना, तब आपको उसका थोड़ा और डिटेल क्लियरिटी मिलेगी वहां पे। जो भी हम कुछ टेस्टिंग में चेक करते हैं ना, इट इज अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट, और जो आपका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ना, उसी के अगेंस्ट हम क्रॉस चेक करते हैं, राइट? सो जो भी जीयूआई टेस्टिंग रहेगा, उसके अगेंस्ट आपके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, या आपका प्रायर टू नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, then second type is the functional testing. Okay, under this testing we are covering up the core behavior of the application. We are checking for the basically functionality, and here are subtopics under this functional testing, like we are checking for object nature, whether they are enabled, disabled, visible or not, right? On the database side also, we are cross checking whatever transactions we are making from the front face or UI, user interface, are they really reflecting into the database? Okay, that part we are validating here. Under the error testing, what we are doing, whatever the programming logic implemented for the error messages, that we are going to validate. Sorry. Okay, and then we have calculation testing, then we have link, cookies and session testing. Okay, so these are the some of the main important areas under the functional testing we need to consider. Later on, third type under the system testing we have seen, that is the non-functional testing. Okay, when it comes to the non-functional testing, it is also one of the specialized area or specialized skill required, because these testings are mainly performed using the tools. Guys, please keep on mute. Okay, yeah, thank you. Okay, so yes, fine. Then, yeah, under non-functional testing, we have covered different types. Like we have seen performance, then we have security, then we have recovery, right? Then we have compatibility, installation, uninstallation, configuration, and sanity. Whatever the additional or future features are there, so that also we are validating, right? So these are the subtypes of your non-functional testing. Okay, and the fourth one type under your system testing, where is the usability. Here, basically, we are checking for the detail help related to the user accessibility, right? If it is a mobile application, then there is a help option, right? If it's a website, there is a help manual, FAQs, that is the frequently asked questions, community circles where we can raise our questions, forums are also there, and support contact forms are there. These are the somewhat main topics related to the usability testing. Okay, yeah, so yes, so these all points we have covered yesterday, right? And we'll be starting with yeah, a few terminologies surrounding to that. And when it comes to the like functional and non-functional, I'll have some, you should explain some in a comparative manner, like under the functional testing what we are going to test, and under non-functional what we are going to test likewise. For example, in case of functional testing, we are validating the functionality, core behavior of software. But when it comes to the non-functional testing, here we are checking for your application performance, security and reliability of the particular software, right? Under the functional testing, we are basically describing how the functionality should work, right?
But when it comes to the non-functionality, it describes how software works, right? For the performance, security, reliability. Okay. Mainly under functional testing, we are concentrating on the user requirement. Whatever the requirement we are receiving from the user, as a part of requirement, we are making the test cases based on the requirement, and later on we are executing on the software, right? That is the part of your functional testing. But when it comes to the non-functional testing side, right, we are morely concentrating on user expectation, because users like जो भी आपका पर्टिकुलर क्लाइंट है, जो भी एंड यूजर है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि जो भी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका परफॉर्मेंस सही से हो, वो सिक्योर हो, रिलायबल हो, इजी टू यूज हो, राइट? सो दिस ऑल कम्स अंडर आवर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एरिया. And in case of functional testing, like this takes place before the non-functional, okay? Because on a first point, what we are checking the functionality, right? Because आपका application दिखने के लिए look and feel में, बाकी सभी चीजों में कितना भी अच्छा हो, और अगर उसका core behavior functional behavior missing है, तो उसका कुछ use नहीं है, right? So in that situation, firstly we are checking for the functional testing, and later on we are like once we finish up with the functional testing, we are focusing on the non-functional. So these are some key differences in between your functional and non-functional. Also, you can describe the types as well, which we have covered yesterday, right? That also you can explain. So these are the some basic level of difference in between functional and non-functional testing. Okay. Sorry. So during the testing journey, we'll come across different terminology. जब भी हम टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, तब हमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग परफॉर्म करना है, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, हम वन बाय वन देखने वाले हैं. सो अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स की बात करते हैं, दिस इज कॉमन, ओके? हमें वन बाय वन देखना है, ओके? विल सी इन डिटेल. One type is regression testing. Then what is regression testing? Then what is retesting that we are going to see? Then what is smoke testing? What is sanity testing? Okay, what is exploratory? Then what is ad hoc? What is monkey testing? Positive, negative. Then end-to-end testing and design techniques. Okay, so these are all some of the important terminologies or software testing types which we are going to use in upcoming sessions. Okay, we'll see one by one. Okay, we need to focus on these testing types for working into the projects. Okay, so we'll start first with the regression. Okay. Okay, fine. Okay, so uh, testing conducts on modified build to make sure there will not be impacted area. Okay, we'll cover one by one. We'll have, okay, we'll cover line by line so that you'll able to understand. Okay, testing conducts on modified build to make sure there will be not there will be no, there will be not an impacted modules due to existing functionality. Okay, so इसका simple meaning है, for example कोई भी एप्लीकेशन में चेंज होता है, राइट? या कोई भी फंक्शनैलिटी में चेंज होता है, तो उस फंक्शनैलिटी की वजह से दूसरे कौन से मॉडल के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है क्या? फॉर एग्जांपल हम जीमेल जीमेल का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, या विल सी इनटू द नोट्स. ओके, so that you guys able to understand. One moment. Guys, a notebook is visible, right? Yes, sir. ओके फाइन. ओके, विल Yes, sir. या विल सी. हम यहाँ पे है ना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में देखते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग टाइप्स है ना, हमें लाइक ड्यूरिंग टेस्टिंग परफॉर्म करते टाइम हमें यूज करने होते हैं, राइट? ओके, चलो लेट्स सी. या सो फर्स्ट वन टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है, दैट इज द रिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, आई विल बी पुटिंग हियर. ओके, so regression testing means what? Up till now we have covered like white box testing, we have seen the black box testing, and under black box testing, okay, okay, under the BBT testing, as a role of tester we are performing BBT testing, and under this BBT testing we have two types.
System. Yes, one is your system testing and another one is your UAT testing, right? UAT test. Okay. So basically this regression testing comes under your system testing. Okay. How? We'll see. Okay, fine. Okay. So yeah, in case of system testing, in case of system testing, okay, we are performing different types of testing here as well. Okay. Under system testing, what kind of testing we are performing? GUI testing we are performing, right? Then we have functional testing here as well. Okay. Then we have non-functional testing, right? Non-functional testing and usability testing. Okay, fine. Let me put here. Okay. Sorry, functional testing and usability testing, right? So these are the subtypes under your system testing. Okay. So जैसे हमने SDLC के phases देखे थे, right? Different. Okay. So वहाँ पे phases बताइए मुझे, चलो. Yes. 6 phases for SDLC. Requirement gathering, requirement Yeah. analysis, Okay. Yes. Design architecture. requirement analytic, Yes, I'll be putting here one moment. Requirement collection. Okay, I'll say requirement collection and analysis, right? Okay, sure. Next one phase is your So design, right? yes, Design load phase. engine. Yes, and coding, next one phase is Yes, your there is. coding coding, phase, right? Once the coding is done, then only we are going testing, for the testing, testing, right? And once the testing is done, deployment is there, development. right? Yes. Development is done here, guys. Okay, yeah, deployment. Okay, deployment is different. Okay, and the last one is nothing but your Maintenance. maintenance, Maintenance. Maintenance. Yes. right? Okay, चलो perfect. Okay, so now see, कोई भी एप्लीकेशन है तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो भी प्रोसेस डिफाइंड है उसमें ये 6 फेजेस तो आने ही है, राइट? सो आउट ऑफ दैट अभी एज ऑफ नाउ देखिए इसका स्कोप कहाँ पे है रिग्रेशन का. ओके, रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट कर ली, इसके बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन बना दिया, राइट? बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन हमने डिजाइन भी कर लिया, बेस्ड ऑन डिजाइनिंग एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन हमने कोडिंग भी कर लिया. अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज आता है ना, दैट इज द टेस्टिंग, राइट? एंड अंडर टेस्टिंग हम जो एज अ टेस्टर परफॉर्म करते हैं दैट इज द बीबीटी टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. एंड इसमें भी दो टाइप्स है, राइट? जैसे हमने कल देखा था, वन इज योर सिस्टम टेस्टिंग एंड अनदर वन इज योर यूएटी टेस्टिंग. तो इसमें भी हमने देखा था, जैसे वंस वी डन विद द सिस्टम टेस्टिंग देन हम यूएटी टेस्टिंग के लिए जाते हैं, राइट? सो इसका फ्लो कैसा है कि लाइक अंडर टेस्टिंग बीबीटी टेस्टिंग हम करेंगे, राइट? एंड विद इन दैट सिस्टम टेस्टिंग फर्स्ट परफॉर्म होगा, लेटर ऑन हम यूएटी टेस्टिंग के लिए मूव ऑन करेंगे. ओके, सो लाइक ड्यूरिंग कोडिंग इटसेल्फ जो भी डेवलपर रहेगा वो पर्टिकुलरली रिस्पेक्टिव यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, राइट? यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है. ओके, एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग एज अ टेस्टर बीबीटी हम कौन से टेस्टिंग पे फोकस करते हैं? बीबीटी, राइट? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, इसमें भी हमने अभी एज ऑफ नाउ 2 टाइप्स देखे, राइट? हियर देयर आर 2 टाइप्स अंडर बीबीटी. Okay, कौन सा है? First one is your system testing and another one is your UAT testing. And under system testing, these are the 4 different types. Okay. Under system testing, these are the 4 different types. Okay. These are also phases. Okay. So under system testing, we have seen like GUI, functional, non-functional, and usability. Okay. So mostly during functionality, okay, like we have observed, okay, or while during GUI, functional, non-functional, or usability, any kind of testing we have observed कि there is a change or there is a deviation, there is a defect. Okay, there is a defect or we can say there is a bug. Okay, what does it mean? जो भी आपका requirement है, right? जो भी आपका requirement है, okay, and जो भी आपको आउटपुट में आउटपुट, ओके, आउटपुट में आपको एप्लीकेशन पे दिख रहा है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस. ओके, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट है,
ओके, एक्चुअल आउटपुट इट मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट है 2+2 = 4, एंड आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ऑन अ वेबसाइट, या जब भी कोई लॉगिन फंक्शनलिटी आप ट्राई करते हो वैलिड क्रीडेंशियल के साथ लॉगिन करने के लिए, लेकिन लॉगिन नहीं होता। सिमिलरली कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए, वो जो हो रहा है, उन दोनों में अगर इनकेस डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज काउंट एज योर डिफेक्ट और बग, राइट। सो बेसिकली एज अ टेस्टर ये हमारा मेन काम है, राइट, ये इस पे हम मेनली फोकस करते हैं। ओके, सो जब भी हम टेस्ट करते हैं, राइट, तो कोई भी चीज में अगर इनकेस डिफरेंस आता है, राइट, सो दैट वी आर मार्किंग एज अ डिफेक्ट। ओके, इसका भी डिटेल में सेशन है गाइस। ओके, सो जब भी हम डिफेक्ट बोलते हैं, राइट, सो पर्टिकुलर डिफेक्ट जो होता है ये तो फ्रॉम कोडिंग साइड फिक्स करना पड़ेगा। तो कोडिंग साइड फिक्स करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो आपका डेवलपर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। सो पर्टिकुलर डेवलपर जो भी हमने बग या डिफेक्ट रेज किया है, ओके, इस पे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल हम बग का इसका आईडी दे देते हैं, ओके, डिफेक्ट या बग आईडी B001। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन यहाँ तक टेस्ट सॉरी कोडिंग फेज तक तो तक उन्होंने एप्लीकेशन बना दिया था। 1 2 3 और 4 ऐसे 4 फीचर्स उन्होंने डेवलप किए थे, राइट। सो रिस्पेक्टिव फीचर का उन्होंने यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन कोडिंग साइड से उन्होंने परफॉर्म किया था, और उन्होंने हमें आगे टेस्टिंग करने के लिए बिल्ड पास ऑन किया था, राइट, यहाँ पे। ओके, सो अंडर बीबीटी टेस्टिंग हम फर्स्टली कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं? तो सिस्टम टेस्टिंग। एंड अंडर सिस्टम टेस्टिंग आल्सो सब टाइप्स है, जैसे हमने कल बात की थी, राइट। सो इसमें कहीं पे भी हमें कोई डिफरेंस नजर आता है एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, सॉरी। ओके, सो उसी चीज को हम एज अ डिफेक्ट या बग रेज करते हैं टू द डेवलपर। अभी डेवलपर जो है ना, उनका काम है बेसिकली वो कोडिंग साइड पे उसका लॉजिक चेक करना, कहाँ पे इशू आ रहा है, राइट, वो चेक करना। और जैसे ही ये पर्टिकुलर इशू फिक्स होता है, ओके, फ्रॉम दी कोडिंग साइड, ओके, इशू फिक्स फ्रॉम कोडिंग साइड, मतलब कोडिंग या बोल सकते हो डेवलपर साइड से उन्होंने फिक्स कर दिया। ओके, अभी जो भी कोडिंग करना था, राइट, वो तो पर्टिकुलर डेवलपर ने फिक्स कर दिया, राइट, बट सेम चीज का हमें वापस से क्या करना पड़ता है? टेस्टिंग करना पड़ता है। ओके, सी जो भी चीज एज पर रिक्वायरमेंट वर्क नहीं कर रही है, राइट, उसका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों में मिसमैच है, तो उस टाइम हम उसके लिए रिस्पेक्टिव डिफेक्ट या बग रेज करते हैं। जो भी डेवलपर पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के ऊपर काम कर रहा है, डेवलपर पर्टिकुलर बग फिक्स कर देता है, राइट, और जैसे ही वो फंक्शनलिटी फिक्स होती है तो उसका नेक्स्ट वर्जन रिलीज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्जन भी थोड़ा देख लेते हैं। कोडिंग, ये चारों भी चार चार 4 फीचर्स है। ओके, ये चारों भी फीचर्स है। इस फीचर के लिए जो भी एप्लीकेशन है आपका, उसका एज ऑफ नाउ है ना V001 वर्जन अभी चल रहा है, राइट। और आई जस्ट राइट _1.0 एज ऑफ नाउ V_1.0 वर्जन चल रहा है, राइट। ओके, ये पर्टिकुलर वर्जन में ये चारों भी फीचर्स ऑलरेडी कोड किए हुए हैं। अभी ये चारों फीचर का ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिल्ड है, राइट, दिस वन इज द सॉफ्टवेयर बिल्ड। ओके, ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिल्ड है हमें टेस्टिंग के लिए मिलता है, राइट। सो अपॉन दिस एप्लीकेशन हम जो भी है बीबीटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें ऑब्जर्व हुआ कि जो भी ये रिक्वायरमेंट है, ओके, जीयूआई लेवल पे सब सही है, ओके, यहाँ पे सब ओके है, ठीक है। देन परफॉर्मेंस भी ओके है एप्लीकेशन का, देन यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से भी ओके है एप्लीकेशन, ओके। बट ड्यूरिंग फंक्शनल टेस्टिंग हमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं। मतलब फंक्शनलिटी 1 जैसे काम करना चाहिए था ना, उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, राइट। सो इन दैट सिनेरियो हमने फॉर एग्जांपल उसके लिए बग आईडी रेज किया 001, ओके। और एक कोई तो थर्ड मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहा, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए भी उसमें फंक्शनलिटी थोड़ा ब्रेक है, उसके लिए भी हमने एक बग रेज किया, राइट। सो इन दैट सिनेरियो क्या होता है, जो भी फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही सही से, राइट, उसी चीज के लिए हम क्या रेज करते हैं? डिफेक्ट या बग। ओके, एंड रिस्पेक्टिव बग जो भी डेवलपर उस चीज के ऊपर काम कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करना, राइट। सो पर्टिकुलर डेवलपर जैसे ही फिक्स करता है ना रिस्पेक्टिव बग को, तो एज अ टेस्टर, ओके, सी एज अ टेस्टर वापस से पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है ना, उसका न्यू बिल्ड हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चारों फीचर के साथ ये वर्जन नंबर था, राइट।
सो जैसे ही डेवलपर साइड से वो पर्टिकुलर बग वन फॉर एग्जांपल फिक्स करते हैं, राइट, सो उसका है ना एप्लीकेशन का वर्जन चेंज हो जाता है, राइट, जो भी एडिशनल फिक्स हुआ बग है ना इसमें एड अप हो जाता है। इट मींस देखिए ये आपके प्रीवियस वाले चारों फंक्शनलिटीज अलोंग विद दैट जो भी बग रेज किया था, राइट, बग 001 हमने रेज किया था, ये फिक्स किया है उनके साइड से, राइट, कोडिंग साइड से या डेवलपर साइड से उन्होंने फिक्स किया है। तो इसके इस एप्लीकेशन के लिए इस फिक्स के लिए पर्टिकुलरली हमें न्यू बिल्ड मिलता है, एंड अपॉन दैट बिल्ड हम जो टेस्टिंग करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू जो भी फिक्स है, मतलब जो भी फीचर फंक्शन में या मॉडल में जहां पे भी प्रॉब्लम था, इश्यू था, उसी जगह पे अगर हम टेस्ट करते हैं ना तो उसी पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब दोबारा टेस्टिंग करना सेम चीज का। मतलब जो भी मॉड्यूल वन का फंक्शनलिटी हमने चेक किया था, मॉड्यूल वन में हमें कुछ तो डिफरेंस मिला, राइट, सेम चीज हमने डेवलपर को रिपोर्ट किया और डेवलपर ने उसको फिक्स कर दिया। अगेन एज अ टेस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेस्ट दी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, राइट। सो अगर उसी पर्टिकुलर बग के लिए जो भी फॉर एग्जांपल जैसे हमने एज ऑफ नाउ मार्क किया था बग 001, जो भी बग है उसी को अगर हम दोबारा टेस्ट करते हैं विद द सिमिलर स्टेप्स, ओके, तो उस चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग। ओके ओके। सिमिलरली आपने जो थर्ड मॉड्यूल के सराउंडिंग फंक्शनलिटी ब्रेक है, फंक्शनलिटी सही से वर्क नहीं कर रही है, राइट, उसी चीज के लिए और एक बग रेज किया आपने। ओके, सो डेवलपर ने क्या किया, सिमिलर बग है जो थर्ड मॉड्यूल में बग था, राइट, उसी को फिक्स कर दिया। तो इसका है ना नेक्स्ट वर्जन और एक उसका एडिशनल फिक्स के साथ वर्जन रिलीज होगा। तो ये जो रिस्पेक्टिव बिल्ड रहेगा इसमें कौन कौन से आपके फीचर्स रहेंगे, 1 to 4 फीचर्स प्लस आपका बग वन फिक्स एज वेल एज आपका जो भी बग थर्ड आपने रिपोर्ट किया था दैट वन इज आल्सो फिक्स, राइट। इसके साथ न्यू आपका बिल्ड वर्जन जनरेट होगा। ओके, सो आप वापस से पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डिफेक्ट बग अगर रीटेस्टिंग मतलब टेस्टिंग करते हो तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, वापस से रीटेस्टिंग। ओके, मतलब टेस्टिंग दी सेम मॉड्यूल अगेन फॉर द बग फिक्सेस। ओके, सो इस सिनेरियो में आपके जो भी सराउंडिंग टू दिस मॉड्यूल ओनली, सराउंडिंग टू दिस टेस्ट केस ओनली, आपने जो भी टेस्टिंग किया उसी चीज को हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। ओके, बट अभी कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक चीज अगर डेवलपर फिक्स करता है, एक चीज का लॉजिक चेंज होता है ना, तो उसके वजह से अदर डिपेंडेंट मॉडल भी चेंज हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ देखिए ये पर्टिकुलर बिल्ड में इतने सारे एड ऑन हुए, राइट, फीचर के साथ बग फिक्सेस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द बग, ये जो पर्टिकुलर बग है ये भी फिक्स किया, राइट, हमने चेक किया, रीटेस्टिंग किया, ऑल ओके। ओके, इस सिचुएशन में है ना एज ऑफ नाउ ऑल ओके, मतलब दोनों भी बग फिक्स हुए हैं, राइट। बट हमने फॉर एग्जाम्पल मॉडल वन और मॉडल थ्री तो चेक किया, बट हमने मॉडल टू मॉडल फोर तो चेक ही नहीं किया, राइट। ओके, या इनके साथ बाकी के मॉडल का इंटीग्रेशन चेक ही नहीं किया। ओके, सो इन दैट सिचुएशन जो भी हम नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं दैट कम्स अंडर योर रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका रिग्रेशन का स्कोप आता है, दैट कम्स अंडर योर रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो रिग्रेशन टेस्टिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, आपने जो भी छोटे चेंजेस किए, जो भी आपने डिफेक्ट रेज किए थे, बग रेज किए थे, उसके अगेंस्ट डेवलपर ने फिक्स किया, आपने उसी पर्टिकुलर मॉडल को चेक किया, तो वो हो गई आपकी पर्टिकुलर रीटेस्टिंग। ओके, उसी पर्टिकुलर मॉडल को चेक किया और आपको लाइक फाउंड हुआ कि पर्टिकुलर बग फिक्स है, अभी उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। एंड फॉर फिक्स बग, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल वन में फिक्स किया, उसकी वजह से है ना सेकंड मॉड्यूल में कुछ इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, थर्ड मॉड्यूल में कुछ इम्पैक्ट हुआ है नहीं, फोर्थ मॉड्यूल में कुछ इम्पैक्ट हुआ है नहीं, ये चेक करने की जो प्रोसेस है ना दैट इज कॉल्ड एज योर रिग्रेशन प्रोसेस। ओके, और रिग्रेशन टेस्टिंग। सो इन सिंपल रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म ऑन मॉडिफाइड बिल्ड। ओके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं रे, जो भी रिग्रेशन टेस्टिंग आपका परफॉर्म होता है वो किस चीज के ऊपर परफॉर्म होता है, मॉडिफाइड बिल्ड। क्योंकि देखिए फर्स्टली जो भी चारों फीचर्स थे वो वर्जन नंबर कौन से में थे, 1.0 में। आपने एक बग मतलब डेवलपर साइड से एक बग फिक्स हुआ तो उसका नेक्स्ट रिलीज
वर्जन जनरेट हुआ, जैसे अनदर बग फिक्स हुआ तो उसका नेक्स्ट वर्जन जनरेट हुआ, राइट। सो लाइकवाइज आपका जो भी रिग्रेशन टेस्टिंग है या रीटेस्टिंग है, इट विल बी ऑलवेज परफॉर्म ऑन मॉडिफाइड बिल्ड। ओके, सो टेस्टिंग कंडक्ट्स ऑन मॉडिफाइड बिल्ड टू मेक श्योर दैट there will be there will be not an impact on other models. Okay, there will be not an impact on other models. ओके, सो एक मॉडल तो हमने फिक्स कर लिया, एक बग तो हमने फिक्स कर लिया, बट उसी की वजह से कोई दूसरे मॉडल पे तो इम्पैक्ट नहीं है। ये चेक करने की जो भी टेस्टिंग हम यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर योर रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है गाइस। वन इज योर यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, फर्स्ट वन टाइप है इसका यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, इसके नाम में ये देखिए, इट इज द टेस्टिंग ओनली सराउंडिंग टू दैट पर्टिकुलर मॉडल। ओके, सो टेस्टिंग डन, सी your unit integration testing is nothing but testing only the changes or modification done by the developers, right? Okay, so that one is the first type. Okay, second type is your regional testing. Okay, regional testing is the second type. Let me put its a small definition. Testing the modified build along with the impacted model. In case of regional testing, what we are doing, in case of regional testing, testing the modified model, जिस भी मॉडल में हमने चेंज किया, फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन मॉडल 1 में चेंजेस हुए हैं, मॉडल 3 में चेंजेस हुए हैं, राइट। सो पर्टिकुलर मॉडल के सराउंडिंग जो भी इम्पैक्टेड मॉडल है, इसके ऊपर डिपेंडेंट, अगर उसका पर्टिकुलर इन कॉम्बिनेशन हम चेकिंग टेस्टिंग करते हैं, तो दैट कम्स अंडर योर रीजनल टेस्टिंग। एंड द थर्ड वन टाइप इज फुल रेग्रेशन, मतलब full regression. Okay, let me put some definition here. Okay, full regression, let's say, so testing the main feature and remaining all the part of application comes under the full regression. Okay, अभी इसका है ना, with the help of example हम try करते हैं समझने के लिए। Okay, चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझना है गाइस, बिकॉज हर एक साइकिल में है ना ये चीजें रिपीट होगी, राइट, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट एंड ऑल। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, यहाँ तक जो भी रिक्वायरमेंट थी या ये 4 फीचर के सराउंडिंग थी। ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो भी रिक्वायरमेंट था, 4 फीचर डेवलप करना था फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। जो भी आपका प्रोजेक्ट का फर्स्ट साइकिल है, उसमें आपको ये फर्स्ट 4 फीचर्स डेवलप करने थे, राइट। सो रिक्वायरमेंट हमें मिली फ्रॉम द क्लाइंट साइड, उसी के ऊपर हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया, देन उसी के ऊपर हमने डिजाइनिंग किया, राइट। एंड फ्रॉम द डेवलपर साइड उसी पर्टिकुलर फीचर के सराउंडिंग डेवलपमेंट हुआ, देन यूनिट टेस्टिंग एंड कोडिंग साइड से इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुआ। ओके, एंड फॉर दिस ऑल 4 फंक्शनलिटी एक वर्जन नंबर जनरेट हुआ सॉफ्टवेयर बिल्ड, दैट इज द 1.0। ओके, सो जैसे ही डेवलपर के एंड से काम खत्म होता है, राइट, उनका कोडिंग एंड बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग, तो हम एज अ टेस्टर कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, बीबीटी। and under BBT हम 2 types of testing perform करते हैं, system and UAT. Now here we are focusing on system testing, right? Okay, so during system testing हमें ऑब्जर्व हुआ कि इन अ फंक्शनलिटी लेवल हमें 2 मॉडल्स में चेंजेस मिले हैं। लाइक फंक्शनलिटी 1 की थी एडिशन की, बट वहां पे एडिशन सही से काम नहीं कर रहा। फंक्शनलिटी थर्ड थी आपकी डिवीजन की या मल्टीप्लीकेशन की, बट वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, राइट। कोई कॉम्बिनेशन के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई लाइक 2+2 के लिए तो काम कर रहा है, बट 2+3 के लिए काम नहीं कर रहा है, राइट, इन अ सिमिलर मैनर। ओके, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो पर्टिकुलर मॉडल के सराउंडिंग जो भी आपकी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही, उसी चीज को हम एज अ डिफेक्ट कंसिडर करते हैं, एंड सिमिलर डिफेक्ट हम रेज करते हैं टू द डेवलपर। ओके, डेवलपर उसी चीज के ऊपर फिक्स लगा देता है, फिक्स लगा देता है, इट मींस जो भी पर्टिकुलर बग फिक्स हुआ है, राइट, उसी के साथ न्यू वर्जन आपका रिलीज होता है। यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक ही बग में शोकेस कर रहा हूँ, इन केस मल्टीपल भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर ये फॉर एग्जांपल बग उन्होंने फिक्स किया, तो उसका एक अलग से वर्जन रिलीज होगा, उसका हम पर्टिकुलर सराउंडिंग टू दैट बग हम जो जो भी टेस्टिंग करेंगे ना, दैट कम्स अंडर योर रीटेस्टिंग। ओके,
आपने चेक कर लिया और एक आपको बग फाउंड होता है, वो भी आपने चेक कर लिया, उसका भी आपको वर्जन नंबर मिल गया और वो भी आपने चेक किया। तो 2 बार आपने रीटेस्टिंग की सराउंडिंग टू आपके बग, राइट। वो दोनों भी बग आपके प्रॉपरली फिक्स है, मतलब आपको अभी उसमें कुछ इश्यू नहीं है फंक्शनैलिटी में। आपकी चारों भी फंक्शनैलिटी सही से चल रही है अलोंग विद जो भी बग फिक्सेस थे। ओके, नाउ नेक्स्ट फेज कम्स इन अ पिक्चर कि अभी बग तो फिक्स हुए, दैट इज ओके, बट ड्यू टू दिस बग फिक्स जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है उसमें कुछ एडिशनल तो चेंजेस नहीं आए, वो भी हमें चेक करना पड़ता है, राइट। मतलब हमने 1 और 3 मॉडल के बग के लिए स्पेसिफिकली चेक किया, बट उसके सराउंडिंग कुछ मॉड्यूल्स इफेक्ट हुए हैं क्या, पर्टिकुलरली चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, रिग्रेशन। Hence, regression testing always conducts on modified build in order to ensure the other models are not impacted, right? So regression test करने के लिए 3 टाइप्स है बेसिकली। यूनिट टेस्टिंग, जो भी मॉड्यूल था पर्टिकुलरली जिसमें चेंजेस हुए हैं उसी मॉड्यूल के सराउंडिंग अगर हम टेस्ट करते हैं तो दैट कम्स अंडर योर यूनिट टेस्टिंग। ओके, and when it comes to like regional testing, particular for example 4 फीचर्स थे। ओके, इस फीचर में आपने हमने मॉडिफिकेशन किया है, मतलब डेवलपर साइड से मॉडिफिकेशन हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड में। फॉर एग्जांपल ड्यू टू फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल थोड़ा डिपेंडेंट था, तो सेकंड में कुछ तो इम्पैक्ट होगा। ओके, सो इन दैट सिचुएशन अलोंग विद दिस लाइक 1 3 मॉड्यूल हम 2 मॉड्यूल को भी हमें चेक करना पड़ेगा। सो दैट कम्स अंडर योर रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट सिनेरियो देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन, ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड मॉड्यूल सेकंड में भी चेंजेस आ गए, मतलब यहाँ पे भी फंक्शनलिटी थोड़ा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी फंक्शनलिटी इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, हमें पता होता है बेसिकली कौन से मॉड्यूल डिपेंडेंट है, राइट। तो हम ऑलरेडी हमें पता है कि फर्स्ट में कुछ चेंजेस होता है तो सेकंड में इम्पैक्ट हो सकता है, थर्ड में कुछ चेंजेस होता है तो फोर्थ में इम्पैक्ट हो सकता है। सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यूनिट टेस्टिंग और रीजनल टेस्टिंग हम फुल रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। मतलब इट मीन्स हम चारों भी मॉडल्स को चेक करते हैं along with the bug fixes, that comes under your full regression testing. ओके, सो अभी तक गाइज हमने 2 टाइप्स कवर अप कर लिए, दैट इज द व्हाट इज रीटेस्टिंग, जो भी बग है उसके सराउंडिंग फिक्स होता है, उसका न्यू बिल्ड नंबर जनरेट होता है, एंड सराउंडिंग टू दैट जो भी हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं दैट कम्स अंडर योर रीटेस्टिंग। एंड ड्यू टू दैट बग फिक्स और एनी न्यू मॉडिफिकेशन इनटू द सॉफ्टवेयर, जो भी चेंजेस होते हैं एंड उसके वजह से अगर अदर मॉडल्स भी इम्पैक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे हम जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं दैट इज द रिग्रेशन टेस्टिंग। एंड रिग्रेशन टेस्टिंग के हमने जस्ट नाउ टाइप्स देखे, यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग, रीजनल एंड फुल रिग्रेशन। यूनिट मींस सराउंडिंग टू दैट मॉड्यूल ओनली, रिग्रेशन sorry regional means due to that module some other 1 or 2 modules are impacted, so that also we are checking, that is the regional. And full regression means due to this we think or we know due to this like multiple modules are impacted, so in that situation we'll be going for full regression testing. Okay, so these are the 2 important types guys. Okay, clear a difference guys यहाँ पे retesting and regression testing. Okay, so yes guys, okay, so yeah, let's see. Okay, few of the important parameters surrounding to retesting and regression testing. Okay, retesting done surrounding to the modified changes modifications, that is the bug fixes, right. And regression testing done basically when there is a bug fix or modification which will be impacting other models, so that comes under your regression testing. Okay, so yeah, let's take another example. An application under test has 3 models, namely admin, purchase, and finance. For example, we have one application which we need to test, and for this application, we have 3 different modules: admin, purchase, and finance. Okay. So yeah, in this module, in this one, finance module depends upon purchase, right? Okay, if we found bug on purchase model and reported to the developer, similar logic here is also okay, then once the bug is fixed the tester needs to retest the same to verify bug related to this purchase model is fixed or not. Okay,
So retesting is nothing but testing surrounding to your bug fixes. Okay, and also as a part of system testing, testers we are doing the regression testing in order to ensure the other model which is dependent upon the purchase model are impacted or not, right? That comes under your regression testing. Okay, that comes under your regression testing. Okay, so here admin model is depending upon like purchase model. Okay, next, like these models are dependent upon each other. So in order to ensure like all models are working fine, we are going for the regression testing and checking the particular model under that bug fix is nothing but your retesting. Okay, fine. Yeah, so this is on the your regression and retesting. Firstly, retesting comes in a picture, and then we'll be going for regression testing if required. Okay, okay. Now, yeah, moving further. Okay, then there are two important terminologies, guys. Okay, comes in a picture. Okay, smoke and sanity testing. Okay, so we'll see uh, a difference in between both. Okay, so smoke always comes first and then sanity comes in a picture. Okay, we'll see. Build smoke testing is called as your build verification testing, and sanity testing is performed on stable build. Okay, we'll see into the notes. Okay, so that will have more clarity. Okay, let me put some points here, guys. Yeah, okay, yeah. Till now here we have covered about the retesting, what is regression testing, right? Now we are going to see smoke testing and sanity testing. Okay, so yeah, like within this, firstly we'll see smoke and we'll have comparison basically in between both. Okay, okay, smoke testing. Okay, so smoke testing is nothing but your build verification testing. Okay, fine. Smoke testing is nothing but your build verification testing. It is the basic functionality check. Okay, it is the basic functionality check. We'll see with relevance to the version number and all. Let me put the point. It is also performed in the initial phase of your build. It is also performed to check the stability. Okay, and basically it can be performed by depend depending upon type of project. It can be performed by dev or tester. As a part of testing team, we are must we should perform this testing. Okay, then for this type of testing we need a new build. Okay, yeah, we'll see first. Okay, for the smoke, and later on we'll move to the sanity test. तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं रिलेटेड टू स्मोक टेस्टिंग का रिलेवेंस कहाँ पे आता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे डेवलपमेंट खत्म हुआ, राइट? तो फर्स्ट वन वर्जन जनरेट हुआ, सॉफ्टवेयर बिल्ड जनरेट हुआ, दैट इज द वर्जन 1.0 1.0. ओके, सो ये पर्टिकुलर जो भी फीचर्स डेवलप किए उनका डेवलपर ने भी टेस्टिंग किया है, और एज अ पार्ट ऑफ क्यूए टीम, एज अ पार्ट ऑफ टेस्टर्स, वी आर आल्सो डूइंग द टेस्टिंग. ओके, एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें जो भी डिफेक्ट्स मिले हैं, राइट, वो हम रेज करके उसी के ऊपर फिक्स करके रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं. बट बिफोर दैट जो भी हमें बिल्ड नंबर मिलता है ना इन द स्टार्टिंग फेज, ओके, मतलब इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर प्रोजेक्ट. ओके, जो भी ये बिल्ड नंबर पर्टिकुलरली मिलता है, इट इज फर्स्टली हियर वी आर परफॉर्मिंग स्मोक टेस्टिंग. व्हाई? यहाँ पे हम स्मोक टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं? In order to check build, it is also called as build verification testing, and in order to check basic functionality testing. Okay, तो देखिए, yes, I'll put this point here so that आपको है ना order में पता चलेगा. Okay, yes, yes, okay, okay, yeah, okay. सो सी गाइस, जैसे ही डेवलपर का पर्टिकुलर कोड का डेवलपमेंट होता है और उसका पर्टिकुलर बिल्ड नंबर जनरेट होता है ना, एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग. ओके,
एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग फेज हम सबसे फर्स्ट मतलब प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ अभी स्टार्ट हुआ है, राइट? हमने स्टार्टिंग फेज में 4 फंक्शंस डेवलप किए, अभी नेक्स्ट फेज में हम 4 और टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट साइकिल में और 4 फंक्शंस टारगेट कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस है, ओके। सो इन अ फर्स्ट फेज जो भी बिल्ड नंबर रहेगा कंपैरेटिवली इट इज अ अनस्टेबल बिल्ड, हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलरली उसका फंक्शनैलिटी कैसा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, राइट? सो इन ऑर्डर टू चेक द बेसिक फंक्शनैलिटी we are performing smoke testing. So as a part of smoke testing हम भी वही GUI लेवल पे बेसिक फंक्शनल लेवल पे ही चेक करते हैं, सच कुछ डिफरेंस नहीं है, बट पूरा डिटेल में चेक नहीं करते, जितना हम यहाँ पे अंडर सिस्टम टेस्टिंग उसका GUI लेवल पे पूरा चेक करेंगे, फंक्शनल पे पूरा, नॉन फंक्शनल पे, यूजेबिलिटी पे, सब टाइप सब टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करके चेक करेंगे, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द स्मोक टेस्टिंग, वहां पे हम बेसिक लेवल ऑफ चेकिंग करते हैं, जैसे एप्लीकेशन सही से इंस्टॉल हो रहा है, एप्लीकेशन सही से अनइंस्टॉल हो रहा है, हम प्रॉपरली लॉग इन कर पा रहे हैं, राइट? बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनलिटी हम चेक करते हैं विद इन अ स्मोक टेस्टिंग एंड इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर एप्लीकेशन, ओके। इन दी या इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ, जो भी आपका स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा, वहां पे बेसिकली हम ये परफॉर्म करते हैं विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग। वी आर चेकिंग द बेसिक फंक्शनलिटी, ओके, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। जैसे हमारा बॉडी चेकअप होता है, राइट? सो अगर हम कोई भी फ्री कैंप में जाते हैं, राइट, वहां पे अगर हम बॉडी चेकअप करते हैं तो बेसिक चीजें चेक होती है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, राइट, फीवर हो गया, वेट हो गया, राइट, बेसिक बेसिक चीजें ओनली चेक होती है। बट अगर हम प्राइवेट चेकअप के लिए जाते हैं, इन डिटेल चेकअप के लिए जाते हैं, तो हर एक चीज का इन डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर एक चीज का प्रॉपर चेकअप होता है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपकी डिजीज रहेगी, राइट? सो दैट इज इन डेप्थ चेकिंग, जो हम बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं, ओके। सो इट इज इन द इनिशियल फेज वी आर चेकिंग फॉर द बिल्ड स्टेबिलिटी, जो भी एप्लीकेशन है, वेब है, वो प्रॉपरली सही से काम कर रहा है क्या, बेसिक लेवल पे वो चेक करते हैं। एंड इट विल बी परफॉर्म बाय dev and tester, mostly we are performing, okay, and from the development side they are also checking ki like build is working or not, right? And it is usually done every time जब भी बेसिकली हम टेस्टिंग करते हैं, कब? जब भी हमें न्यू बिल्ड रिलीज मिलता है, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बिल्ड मिला तो यहाँ पे भी आपका स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म होगा। देन जो भी छोटे चेंजेस हुए, बग फिक्सेस हुए, उसका भी बिल्ड हमें मिला, तो वहां पे भी हम बेसिक लेवल चेक करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन सही से लॉग इन ही नहीं कर पा रहा है, लॉन्च ही नहीं हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो आप डिटेल टेस्टिंग करके कुछ फायदा नहीं है, राइट? सो ऑन दैट फ्रंट will be performing smoke testing in order to check your uh, build stability, okay? So हम in the starting phase check करते हैं, why? In order to check, okay, in order to check build stability, right? Okay, in order to check build stability, okay. In a very similar manner, जो second type है ना, that is the sanity testing. Now you'll get idea what is the basic difference in between both, okay. In case of sanity testing, it is performed relatively on stable builds, okay. It is performed relatively ऑन स्टेबल बिल्ड्स। इसका मीनिंग क्या है गाइस, देखिए, ओके। फर्स्ट साइकिल में हमने ये 4 फीचर्स डिप्लॉय कर दिए, देन जो भी बग फिक्सेस थे उसके अकॉर्डिंग वर्जन नंबर बनते चले गए, राइट? अभी फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट साइकिल हुआ, 4 फीचर हमने डेवलप कर लिए, सेकंड साइकिल हुआ, 4 फीचर्स कर लिए, लाइकवाइज हमने 10-20 नंबर ऑफ फीचर्स डेवलप किए, तो अभी है ना हमारा एप्लीकेशन एक तरह से थोड़ा स्टेबल हो गया, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ना, इट इज बेसिकली सिमिलर सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग होता है, बट थोड़ा इन डिटेल टेस्टिंग होता है, दैट कम्स अंडर योर sanity testing, okay. So here we are checking the basic functionality along with the bug fixes, okay. हम थोड़ा है ना स्टार्टिंग फेज पे यहाँ पे फोकस करते हैं कि हमने बेसिक फंक्शनलिटी, लॉगिन सही से वर्क हो रहा है, लिंक प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, राइट? जो भी बेसिक बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनलिटीज है वो तो चेक करते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट अगर जो भी मेजर बग फिक्सेस है वो भी हम क्रॉस चेक करते हैं इनिशियल फेज पे ही, दैट कम्स अंडर योर सैनिटी टेस्टिंग, ओके। क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन सही से स्टार्ट में ही वर्क नहीं करेगा ना, सो इन डिटेल टेस्टिंग करके भी कुछ लॉजिक नहीं है, राइट? ओके।
So yeah, this sanity testing is relatively performed on stable build, as yeah, in the definition we only stated. The next important point is it is relatively performed on stable build. Okay, then it is ideally it is performed by the testers only. Okay, sanity testing is performed by the tester because we need some time, right? And it's a main responsibility of tester to check the same. Okay, and it is not planned when there is a no enough time, okay, for doing the in-depth testing. Will also going for the sanity. Okay, in order to check the build stability as well as when there is a no enough time. So in that situation we'll be checking for main basic functionality as well as bug fixes. So these are some key differences guys in between smoke and sanity. सो या ड्यूरिंग टेस्टिंग जब भी हमें कोई न्यू बिल्ड मिलता है तो अगर वो बिल्ड पर्टिकुलर न्यू है प्रोजेक्ट, राइट, तो इन ऑर्डर टू चेक दैट बिल्ड स्टेबिलिटी हम जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं दैट इज द स्मोक टेस्टिंग। वेरी हाई लेवल पे हम चेक करते हैं जो भी फंक्शनैलिटी है। जैसे रिलेटिवली डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऐड होते हैं, बग्स फिक्स होते चलते हैं, राइट, और जो भी आगे वाले स्टेबल थोड़े रिलेटिवली बिल्ड हमें मिलते हैं, सो उस पे उसके ऊपर हम जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं दैट कम्स अंडर योर सैनिटी टेस्टिंग एंड इट इज ऑलवेज परफॉर्म ऑन रिलेटिवली स्टेबल बिल्ड। हम बेसिक फंक्शनलिटी यहाँ पे तो चेक करते हैं बट एज वेल एज वी आर चेकिंग फॉर द बग फिक्सेस। ओके, and it will be performed by the testers, and if we don't have any as such long time for the testing then also we can perform the sanity as well. But on the each build, like new build or new release, will be testing this both the testing depending upon the stability of build. Clear है guys दोनों में different? Let's yeah, चलो बोलो first one, document से बोलो। BRD, चलो BRD, next one। SRS, SRD, SRS, okay, SRS, then HLD HLD, HLD, LLD. LLD, and ELLD, okay, then next बोलो चलो। then we have coding, right? coding, ओके, कोडिंग testing, में कौन सा टेस्टिंग होता है Test. बोलो चलो? यूनिट टेस्टिंग unit testing, integration testing. एंड integration. इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन। ओके फाइन, ओके चलो, ये जैसे ही खत्म होता है एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग टीम हम उसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इनिशियल फेज पे कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे? Smoke स्मोक testing. टेस्टिंग, Smoke, राइट। smoke, ओके, एंड अगर वो पर्टिकुलर बिल्ड रिलेटिवली स्टेबल है तो उसके लिए कौन सा sanitary, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे? sanitary, सैनिटरी, sanitary. सैनिटी टेस्टिंग, डन। ओके, जैसे ही स्मोक और सैनिटी आपका खत्म होता है तो आप कौन से टेस्टिंग के रिलेटेड चेक करोगे? सिस्टम System Regression. टेस्टिंग, System, सिस्टम टेस्टिंग। regression. ओके, सिस्टम टेस्टिंग में ही आते हैं बेसिकली पिक्चर में आपके। इसमें आप कौन सा परफॉर्म करते हो? तो आपका अगर Regression, बग फिक्स, यस, बग फिक्स retesting, हुआ है आपका तो वहां पे आपका रीटेस्टिंग होगा। ओके, एंड ड्यू टू दैट बग फिक्स अगर कोई मॉडल इम्पैक्टेड है तो आपका कौन सा टेस्टिंग होगा रे? regression. Regression test. रिग्रेशन regression. टेस्टिंग, राइट, और Sir, उसके वो यस रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके चलो, ओके, जैसे ये सारा कुछ टाइप्स आपके खत्म होते हैं ना देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द यूएटी टेस्टिंग, UAT, पता है, राइट। yes, सो और यहाँ पे यूएटी में भी आप क्लाइंट के beta, साथ, यस, बीटा एंड अल्फा। ओके, alpha. yes, so in case of alpha will be like will be having internal team as well as client. Okay, okay, will be having team plus as well as client, but in case of beta like your end user will be there, right, and based on feedback will be making the Modif. changes. Okay, yes, we will be making the modification. तो ये guys पूरा flow clear है? स्टार्ट में रिक्वायरमेंट कलेक्ट होगा, देन उसका थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, देन उसका डिजाइनिंग होगा, देन उसका कोडिंग होगा। फ्रॉम द डेवलपर साइड एज अ पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग दे विल बी चेकिंग फॉर ऑन कोडिंग साइड लाइक यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। जैसे इसका पर्टिकुलर बिल्ड नंबर हमें मिलता है यहाँ, हियर आई विल पुट बिल्ड नंबर। ओके, बिल्ड नंबर, ओके, yeah, build or build depending upon, okay, yeah, build number, I'll write build number। okay, build number जैसे हमें मिलता है so based on its stability will be performing smoke, if that build is relatively stable then we'll be performing sanity। okay, so once we done with this smoke and sanity then we are going into the detailed testing under the system testing। okay, and once we done with that all detail testing and if there is any functional change, okay,
any bug found, and that one is fixed, so we are performing retesting surrounding to that. And due to this bug, if any another model is impacted, then we'll be performing regression. And there are three types of regression: your unit, regional, and full regression. So if surrounding to only specific model, that one is your unit regression. If it is due to that one or other two models are impacted, then that one is the regional. And due to any bug change or modification, if all the models are impacted, then that one is your full regression. Okay, so yeah, from the system testing side, if we done with all level of testing and all bugs are fixes, then only we are going towards the UAT testing. And within the UAT testing, there are two types: alpha and beta. In case of alpha, your client involvement is more, and when it comes to the beta, your end user involvement is more. Okay, जैसे ये एंड यूजर का भी हमें गो हेड आता है, मतलब सॉरी क्लाइंट का गो हेड आता है, ये एंड यूजर से फीडबैक लेके हम वापस जो भी रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है वो चेंजेस करते हैं, वापस से उसका टेस्टिंग होता है। सब कुछ जब ओके होता है ना, देन एंड देन ओनली विल बी गोइंग फॉर डिप्लॉयमेंट। ओके, और यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा, इट विल गो लाइव। सो उसी पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन आपका है ना लाइव हो जाएगा ना, उसी को बोलते हैं गो लाइव। ये आपका रिलीज भी बोलते हैं। ओके, दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स गाइस। ओके, प्रोडक्शन भी बोलते हैं आपका, प्रोडक्शन सर्वर, ये नाम से बेसिकली प्रोडक्शन। अवर एप्लीकेशन इज इन प्रोडक्शन सर्वर, मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वेबसाइट विजिबल है, राइट। प्रोडक्शन और शॉर्ट फॉर्म है इसका प्रोड सर्वर। ओके, सो दीज आर दी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की आपका एप्लीकेशन सही से बना है, वो टेस्ट भी हुआ है प्रॉपरली, राइट, उसका यूएटी टेस्टिंग भी हुआ है, राइट, क्लाइंट ने भी अप्रूवल दिया है, देन एंड देन ओनली विल बी गोइंग दैट keeping that application into the production server, right. It is also called as first time when we are releasing that app is called as go live, and next में आपके रिलीज रहेंगे, रिलीज 1, रिलीज 2, जो भी आपके साइकिल ऑफ इटरेशन रहते हैं ना, इतने नंबर ऑफ फीचर्स डेवलप किए, अभी हमें वो क्लाइंट को शोकेस करके रिलीज करना है, राइट। प्रोडक्शन मींस आपका एक्चुअल प्रोडक्शन सर्वर, जहाँ पे आपके लाइव एंड यूजर्स इंटरेक्ट करते होंगे, राइट, एंड यूजर्स आपके। फाइन, एंड जैसे ही ये लाइक प्रोडक्शन में जाता है ना, तो देन विल बी हैविंग मेंटेनेंस टीम फॉर टेकिंग द टेक केयर ऑफ एप्लीकेशन फ्लो। जो भी उसका मेंटेनेंस रहेगा वो चलता रहेगा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, राइट। एंड हियर लाइक वी हैव सीन L1 L2 दैट स्ट्रक्चर हियर, it depends, like L1 L2 will be there, L1 L2 L3 will be there depending upon type of company. Clear is पे guys, like regression, retesting, smoke, sanity and पूरा entire flow इसका। Yes, sir. Okay, finally.